Guys, so today's lecture is about gynoecium. And what is meant by gynoecium? It is one of the essential worlds of the flower. Again, जिस तरह हमने एंड्रोशियम करा है, इसी तरह gynoecium essential world. When someone will say me how it is essential world, essential means vital world. Vital in the sense that it is directly involved in the reproduction. And gynoecium is actually you know we call the gynae doctor. Gynae doctor. Gynae doctor means the doctor who treats female patients and who is a female doctor. And all female parts of a flower constitute the gynoecium. What are the female parts of the flower? We can call it loosely as pistil. Pistil में क्या है? It consists of a ovary, style, and stigma. Ovary, style, and stigma. Now, you know, pistil, ovary, style, and stigma, when we draw the female part of a flower, you have this, the upper palate form is the stigma, the elongated part is the style, and this basal swollen part is the ovary. Now, carpal is conduplicate megasporophyll. That is when you have read about the pteridophytes, there you have the sporophylls, megasporophyll, microsporophyll. When it is a megasporophyll and that sporophyll has folded and become closed structure, so that is called the conduplicate megasporophyll. This is the evolution, how the things have happened. You see here it is a megasporophyll. Megasporophyll means megaspore bearing leaf, megasporophyll, megaspore bearing leaf. And this megaspore bearing leaf has megasporangia, and those megasporangia later on, when this megasporophyll folds and it becomes a closed structure in angiosperms. And in angiosperms, it is a modified and highly evolved structure wherein it has the receptive portion for the pollen grains or male gametophytes. And that receptive portion is the stigma, then style, and basal swollen portion, that is the ovary, where in those megasporophylls, megasporo, megasporangium, megasporangia, they have become integumented and have become the ovules. These ovules contain the female gametophyte. And how these ovules contain the female gametophyte? Because ovules में ही development होता है female gametophyte का. Female gametophyte को हम embryo sac भी कहते हैं. The commonest type of embryo sac in angiosperms is polygonum type of embryo sac, and that polygonum type of embryo sac has 7 cells and 8 nuclei. 7 cells and 8 nuclei. Eight. You have read it in your 12th class as well. So coming straight and immediately moving to next slide. This is gynoecial development. We have this. These are the cross sections of the carpels in their basal swollen part ovaries. This ovary CS means cross section. It is a gynoecium where the carpels are fused. This is here the fusion, and here 3 chambers are present. इसमें 3 chamber होते हैं. See the chambers, 1 chamber, 2nd chamber, and 3rd chamber. Each chamber contains 2 ovules. In total, it means it has 6 ovules. So this has become fused like this structure, wherein the ultimate section, cross section of it looks like it.
It has three locules. This is one locule, second and third, and each locule there are two ovules. और ovule को हम कहते हैं integumented megasporangium B. So the ovules can this is how, and this was a megasporophyll. It has become closed, and these three megasporophylls have joined with one another, and all the megasporophyll have become a single structure, and in that structure they have contained all the ovules. This is the again gynoecial fusion. This is carpal. These are three carpals. The three carpals look like individually as, and the condition here is that all the three carpals are free. This condition is called apocarpus. क्या कहते हैं इसको? Apocarpus. All the three carpals are here. They are separate. See again, the carpals have become fused, and they have become like one ovary, and this fusion has resulted in formation of the syncarpus condition, while we have carpals fused. And this is the diagram. This is the section of the ovary, while there seem to it seems to have two ovules. It seems to have this one. Can you see it? This one. इसमें three Yes, sir. chambers है, three chambers है, and in chambers में these are the ovules. See how many chambers are in this ovary. This is a syncarpus carpal, syncarpus gynoecium. Well, so many carpals have fused. These are the fusion margins. These are septae where they have fused. So here are number of chambers. We can count them as well. This is the cross section of that carpal. While the carpals have fused, जहां पर carpals fuse हुए हैं. This is again gynoecial fusion. We are studying the how gynoecium, there is fusion in the gynoecium. यहाँ पे अगर आप देखेंगे, it is a single carpal and it has only one locule. Locule means chamber, and in the chamber there are two ovules. So this gynoecium is unicarpalus. Unicarpalus means it has only one carpal. We have this example as well, Rhytina caphra. This belongs to family Fabaceae. It is having only one chamber, one locule, wherein there are so many these ovules. Interesting slide is it. हमने इसको पढ़ा भी है. This is the placentation. Any one of you can tell me what is placentation? Placentation is Arrangement of ovules. The arrangement of body. ovules in the ovary. In the ovary, how that arrangement, how what is the pattern of that arrangement? So accordingly, we have different kinds of that arrangement, and so we have different patterns of placentation. This is axial placentation. This one. This is axial placentation, and in all the cases, we have longitudinal section, and in longitudinal section, the ovules seem to have are attached on the this placenta lengthwise. So here the ovule, अगर इसका हम क्रॉस सेक्शन लेंगे ऐसे, ट्रांसफर सेक्शन ऐसे लेंगे इसका सेक्शन,
So these alveoli are attached to the central portion, that is the axis. और ये इसका कॉलम, एक कॉलम लेंगे, दिस इज द सेंट्रल एक्सिस, द alveolus are attached to it. So this kind of placentation is called a axial placentation. Now this is parietal placentation. आप axial को छोड़ के parietal placentation पे जब आते हैं, तो in parietal placentation what you look here, the alveolus, आप खुद देखेंगे कि alveolus are not attached to the axis, they are attached to the periphery, to the margin. यहाँ पे margin पे, यहाँ here it seems that three carpels have fused, and at the fusing ends, alveolus are attached to the ovary wall के साथ ये attach है. So this becomes the parietal placentation. Parietal periphery में to the ovary wall. And now यहाँ पे these all are parietal placentation. This is parietal septate placentation. यहाँ पे septate है. Ovary has many locules. This is marginal placentation. When the alveolus are attached to the sutures of the, for example, this is the carpal, there it is the suture, on those margins, the alveolus are attached. This is called the, what is it? मार्जिनल प्लेसेंटेशन. ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है. दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस मार्जिनल प्लेसेंटेशन. लैमिनर प्लेसेंटेशन, यहाँ पर सेप्टे है, एंड ऑन दो सेप्टे द alveolus आर attached like sheets. दिस इज फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन. फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन और एक्साइल प्लेसेंटेशन में ये फर्क है कि ये जो सेंट्रल टिश्यू है, इट इज नॉट परमानेंट, इट लेटर ऑन डिजेनरेट्स. यहाँ पे कुछ नहीं रहता है. सो द alveolus seem to initially they are it is axial placentation, but later on it becomes the free central placentation. आया समझ? This Yes, sir. is parietal axial placentation. That is, it is both the alveolus are attached to the periphery of the ovary. Besides, in there is a septum as well. The septum persists, and it is both way. It is parietal as well as axial. यानी axis के साथ, central axis के साथ, और at the periphery, at the margins, alveolus attach होते हैं. Now this is apical pendulous placentation. What is apical pendulous placentation? This is the ovary chamber, and in this ovary chamber, the ovule is hanging and attached to the periphery at the apex. See, so it is called apical pendulous. जिस तरह आपने catkin inflorescence में देखा था कि catkin inflorescence is a raceme, which is a hanging raceme, which is a pendulous raceme. अब यहाँ पे basal placentation. How the basal placentation differs from apical placentation? Any one of you? Basal placentation apical placentation से कैसे differ करती है? यहाँ पे at the base of the ovary, ovule arises. Ovule is attached at the base of the ovary. So this is called Basic. basal placentation. Basal placentation का ये longitudinal section है. Now the last one is apical axial placentation. एक तो apex पे these alveolus are attached at the apex of the ovary toward the apical portion. That is, this is the ovary basal swollen part, and this ovary has this portion as apical portion. This is the basal portion. When the alveolus are attached to the apical portion, besides there remains the central axis. This is called apical axial placentation. Now moving on to the next slide. आप ये डायग्राम देख सकते हैं? Yes, sir. क्या दिख रहा है यहाँ पे?
ये वाला क्या है? ओवरऑल ये दीज आर द केसेस ऑफ व्हाट? एक्साइल प्लेसेंटेशन। आवरी में एक सेंट्रल एक्सीज है, एक टिश्यू है, उसके साथ एव्यूल्स आर अटैच्ड बाय देयर प्लेसेंटे, एंड दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ दिस ओवरी लेंथ वाइज। ये क्रॉस सेक्शन है एक्साइल प्लेसेंटेशन में, एंड दिस इज आल्सो द क्रॉस सेक्शन। इसमें दिस इज द सेंट्रल कॉलम ऑफ द टिश्यू टू विच द एव्यूल्स आर अटैच्ड। आपको ये रियल पिक्चर्स में ऐसे दिखेगा। ओरी का सेक्शन लेंगे, क्रॉस सेक्शन, दीज आर द एव्यूल्स एंड दीज आर अटैच्ड टू दिस सेंट्रल टिश्यू। ये सेंट्रल टिश्यू के साथ अटैच है। सो दिस बिकम्स व्हाट? एक्साइल, Exile presentation. एक्साइल प्लेसेंटेशन। पैरेटल प्लेसेंटेशन की डायग्राम है ये, हमने पढ़ा। दिस इज द मार्जिनल प्लेसेंटेशन टुवर्ड्स द मार्जिनस, दिस इज बेसल प्लेसेंटेशन, दिस इज लैमिनर प्लेसेंटेशन, दिस इज फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, and this is apical axial placentation, apical pendulous placentation. Now style position, स्टाइल कहाँ पे निकलती है टू द किसको? एक कार्पल जो है उसमें देयर इज, यू सी, फॉर एग्जांपल दिस इज द बेसल swollen पोर्शन, दिस इज आवरी, और यहाँ पे ये जो स्टाइल है इट हैज अराइजन एट द टर्मिनल पोजिशन, दिस इज कॉल्ड द टर्मिनल स्टाइल। अब अगर ये स्टाइल इस तरह निकलेगा साइड में, देन दैट स्टाइल इज कॉल्ड लेटरल स्टाइल। और जब आवरी के बेस से निकलेगा स्टाइल, दिस इज कॉल्ड गाइनो बेसिक। मैंने बहुत बार बोला द गाइनो बेसिक कंडीशन, गाइनो बेसिक कंडीशन इज फाउंड इन, क्लास में बोला था मैंने बहुत बार, गाइनो बेसिक कंडीशन इज फाउंड इन, किसी को याद है? सर याद नहीं है। ओहो, गाइनो बेसिक कंडीशन उनमें वारे लाइट, गाइनो बेसिक कंडीशन इज प्रेजेंट इन, जहां पर मैंने बताया था वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस, वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस is characteristic feature of family लैमिएसी। लैमिएसी, जिसमें लैमिएसी alternative name of labiati, लैबिएटी। lamiaceae is alternative name of लैबिएटी। labiati। और see how gynobasic ovary looks like, it arises at the very base of the ovary, ये ओरी के बेस से निकलती है। गाइनोबैसिक ओवरी आप याद रखेंगे, अब इट इज प्रेजेंट इन कहाँ पे? फैमिली लैमिएसी। लैमिएसी एंड लैबिएटी। लैमिएसी एंड लैबिएटी फैमिली आप जानते हैं, उनमें कौन कौन से? सर मिंट। मिंट, पुदीना, अच्छा। नाउ वर्बनेसी में दिस इज द लेटरल टर्मिनल स्टाइल, सीधे ओवरी के ऊपर से स्टाइल निकलता है।
स्क्रीन है? Yes, sir. देखिए यहाँ पे हियर इट इज एवरी काइंड शोन। यहाँ पे गाइनोबेसिक गाइनोबेसिक स्टाइल पोजिशन, यानी स्टाइल अराइजेस फ्रॉम द वेरी बेस ऑफ द आवरी। ये स्टाइल अराइजेस फ्रॉम द लेटरल साइड ऑफ द आवरी एंड दिस इज द टर्मिनल पोजिशन। स्टिग्मा टाइप्स, देखिए स्टिग्मा के कितने टाइप्स होते हैं। स्टिग्मा, यू नो व्हाट इज स्टिग्मा? स्टिग्मा क्या होता है? Receptive surface for pollen grain. The receptive surface, terminal position. This is the ovary, कार्पल। यहाँ पे ऊपर जो प्लेटफॉर्म होता है, टर्मिनल रिसेप्टिव पोर्शन, दैट इज कॉल्ड, व्हाट इज दैट कॉल्ड? स्टिग्मा। सी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टिग्मा आर हियर? डेस्कोइड है, ग्लोबोज है। ग्लोबोज मीन्स गोल गोल, ग्लोबोज स्फेरिकल। वी हैव दिस linear stigma. We have plumose, feathery like stigma. And every stigma has a role. What is the role of stigma? What is the role of stigma? Pollen grains. Pollen grains को receive करना, not only to receive pollen grains, but to recognize the pollen grains, whether the pollen grains are compatible or इनकम्पैटिबल। जो रिकॉग्निशन की रिएक्शन होती है कि पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाए या ना हो जाए, दैट इज डिसाइडेड बाय द स्टिग्मा। आया समझ? स्टिग्मा पे वो रिएक्शन होती है। यहाँ पे, यहाँ वी हैव 3 कार्पल्स। कितने कार्पल है यहाँ पे? हाउ मेनी कार्पल्स आर हियर? स्लाइड है? No, sir. स्लाइड नहीं है। एक मिनट, इसमें कुछ इश्यू हो रहा है। अब आया स्लाइड? जी सर। कितने कार्पल है यहाँ पे? 3. 3 कार्पल। 3. यहाँ पे क्या है? पिस्टल एक ही है। Yes, sir. कार्पल्स है बिकम फ्यूज्ड, लेकिन ऊपर स्टाइल कितने हैं? 3. कोई नहीं आ रहा है। दीज आर स्टाइल्स 1, 2 एंड 3। 3. दिस इज द आवरी। लेकिन इस आवरी में हाउ मेनी कार्पल्स है फ्यूज्ड? 3 carpels. इस पिस्टल में, दिस पिस्टल हैज 3 कार्पल्स। इस पिस्टल में कितने कार्पल है? 3. 3 कार्पल। यहाँ पे ये कार्पल फ्यूजन, कार्पल नंबर, ये पढ़ा हमने, ये भी पढ़ा। दिस, व्हाट इज दिस? दिस इज इम्पोर्टेंट। Okay. क्या है ये? फ्लोर, Floral line. फ्लोरल डायग्राम। Diagram. तो छू उस बस मुश्किल बात करेंगे।
आप सब कुछ देख सकते हैं। Yes, sir. देखिए क्या क्या है। फ्लोरल डायग्राम में जो फ्लोरल पार्ट्स है वी रिप्रेजेंट देम बाय द डायग्राम्स। उनकी जगह हम बनाते हैं फिगर्स, शक्लें बनाते हैं। आप अगर ये गौर से देखेंगे, यहाँ पे एवरीथिंग इज लेबल्ड। अगर हम अंदर से बाहर निकलेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम इनर साइड, अंदर है ये, दिस इज द, व्हाट इज दिस इज गाइनोशियम। और इसमें Yes, sir. एक दो तीन कार्पल्स है। द कार्पल्स आर फ्यूज्ड। और जो प्लसेंटेशन है इट इज एक्साइल प्लसेंटेशन। क्या है? Exile Excel. plus. इसके बाद आफ्टर गाइनोशियम वी हैव दिस सेकंड वर्ल आफ्टर दिस एंड थ्री स्टेमन्स, वन टू एंड थ्री। वन टू एंड थ्री मीन्स स्टेमन्स अंदर वाला ग्रुप में तीन है। दे आर एग्जैक्टली अपोजिट टू द इनर पेटल्स, Plus. एपिटेपलस, टेपल्स। Plus. एंड इसके बाद वी हैव अनदर थ्री स्टेमन्स, वन टू एंड थ्री। इसका मतलब है दीज आउटर थ्री स्टेमन्स आर अपोजिट टू आउटर टेपल्स and alternate to inner tablets. So overall here androecium comprises of how many stamens? Six. Six. But the merosity is three. क्योंकि in each burr of androecium there are three stamens. अंदर वाले वरल में तीन स्टेमन है, बाहर वाले वरल में तीन स्टेमन है। मेरोसिटी इज थ्री। यू सी यहाँ पे टैपल्स भी तीन तीन है, आउटर टैपल भी तीन है, इनर टैपल भी तीन है। सो पेरियाथ हियर इज वन टू एंड थ्री टैपल्स एंड इनर थ्री टैपल्स। दिस इज द ब्रैक्ट। What is bract? Bract is the leaf-like structure present on the pedicel of the flower. This is Flower. flower, and on that pedicel there is a leaf-like structure that is called bract. अगर आप if you have read some family in your this morphology portion of 11th class, there is a family, if you remember, that is, कौन सी फैमिली है वो? लिलियसी पढ़ी है? गंड फैमिली। Yes. आप इस डायग्राम को समझ सकते हैं? कोई बताए मुझे। दिस इज द ब्रैक्ट। ये आउटर वर्ल क्या है? यहाँ एवरीथिंग इज लेबल्ड सेपल्स। कितने सेपल्स है? वन टू थ्री फोर एंड फाइव। के बाद है पेटल्स, करोला, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। उसके बाद है स्टेमन, वन टू थ्री फोर। और एक स्टेमन को स्ट्राइल स्टेमन बना है, दैट इज नॉट फर्टाइल, Stem. दैट इज कॉल्ड स्टेम नोड। अब गाइनोशियम, गाइनोशियम इज बाइकार्पलरी एंड यहाँ पे एक्साइल पैराइटल प्लेसेंटेशन है। क्या है? Exile parrot. यहाँ पे इट इज एक्साइल पैराइटल प्लेसेंटेशन। इन्फ्लोरेसंस हमने डिटेल में पढ़ी। इन्फ्लोरेसंस अब फिर से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास कल मैं लूंगा क्लास सिटम ब्रांचिंग और नेक्टरीज। दिस इज इन्फ्लोरेसंस। इन्फ्लोरेसंस इज सिंपली collection or aggregation of flowers and these are various types of inflorescences. You can look at the diagrams. ठीक? Yes, sir. we will move on move on hurriedly। जल्दी करेंगे हम। you see the slides।
inflorescence parts, peduncle, pedicel. These are several inflorescences. Bract कहाँ पे है? Bract देखिए, ये leaf like structure. इन्वोल्यूकर क्या होता है? इन्वोल्यूकर होता है ग्रुप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस ब्रैक्ट। होता कि नहीं? Yes, sir. This is supadex. This is the bract that is called supathy. Determinate, indeterminate, siam, dichasium. This is dichasium, peduncle, compound dichasium, compound siam, monochasium, one axis में, helicoid siam, scarpoid. इंडिटर्मिनेट, स्पाइक, रेसीम। फर्क देखिए खुद, हमने बहुत बार पढ़ा। कोरियम कोरियम कंपाउंड, पैनिकल। These are examples of the field. Secondary inflorescences, compound umbel, raceme of spikes, specialized inflorescences. This is catkin. See, it is pendulous. Raceme is of spikes, panicle is of spikellatus. Male flowers middle में होते हैं catkin में. Specialized inflorescences. See the spadix. यहाँ पे ये white colored, it is a spathy bract. This is hypanthodium. आप ये रिवाइज करेंगे फिर से, हमने ये बहुत बार पढ़ा। दीज आर स्पेशलाइज्ड इन्फ्लोरेसेंसेस। दिस इज द स्पाइकलेट। यहाँ पर गुलियम है, फ्लोरेट्स है, लेम्मा है, पैलिया है। इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली ग्रैमनी। दिस इज द हेड और कैपिचुलम। यहाँ पे रे फ्लोरेटस, डिसिक फ्लोरेटस, बाहर वाले जो ब्रैक्टिस का कलेक्शन है। दिस इज द इन्वोल्यूकर, हेड और कैपिचुलम। इसमें सेक्शन है। दीज आर डिफरेंट इन्फ्लोरेसेंसेस। एनी क्वेश्चन? किसी को है कोई क्वेश्चन? सो वी हैव फिनिश्ड दिस ऑल, क्या कहते हैं इसको, Innovation. मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर। ये हमने सारा रिवाइज किया। कोई क्वेश्चन है? अब कल एक इम्पोर्टेंट लेक्चर लेंगे, कल और परसों, बस 2 लेक्चर लेंगे। अब कितने लेक्चर? No. 2 लेक्चर है बस। 2 लेक्चर में हम फिनिश करेंगे। तो कल और परसों बस। ठीक है? Yes, sir. ठीक है। चलिए ठीक है, लीव।